Hello friends, today we learn how to code HR tag, center tag and image tag, and we also know that how to change the background color of web browser. So let's start. To change the color of the web browser, you have to code like this. Means first code bg color is equal to, we have to code any color name, like I am coding yellow, or you can code green. So like this you have to code, and I already saved it. See friends, it comes like this. फ्रेंड्स देखिए ये इस तरीके से आ गया है. देखिए कि ये सारा बैकग्राउंड कलर येलो है. तो लेट्स नोट हाउ टू कोड एचआर टैग एंड सेंटर टैग. फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये हमें इस तरीके से कोड करना था पीची कलर के लिए. तो चलिए अब हम जानते हैं कि एचआर टैग और सेंटर टैग को कैसे कोड करते हैं. Friends, like this we have to code HR tag, and inside HR tag I'm coding contact us like this, and then we have to uh, type any number you want. Now let's see the output of this text. So let's see the output. Friends देखिए HR tag को इस तरीके से कोड करते हैं, और HR मैंने दो HR टैग लिए हैं. HR टैग हम लाइन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. So we use HR tag to make a line, horizontal line. And now let's see that how it comes. Friends, see it comes like this. See how this line is here, and this line is here because of HR tag. HR tag is used to make a line and see contact us. But I want contact us in center. So how can I do it? So let's know. Friends, to code center tag first I'm rubbing it, and uh, we have to code like this. There is no. Okay, now here we have to code contact us. You can see now. Let's see the output. And if you code center tag, then your text means that text you written inside the center tag will come in center. So let's see the. See friends how it come. So like this you can use center tag. So now the last topic of our today's video, image tag. So let's know how to display a image in our web browser. So let's see how to code. Friends, see here I saved this two file of HTML, and in this folder means in the folder of HTML I saved one image folder, and in this folder there's so many image. So I can choose any one image which I want to display in my web browser. Like I want to display this image. First right click on it and then click on properties. See the type of file, and the type of file is JPG file, but JPG is written in capital letters. So now let's know that how we can display an image in our web browser. Friends,
टू डिस्प्ले अ इमेज इन वेब ब्राउज़र, इमेज को अगर आपको वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले करवाना है तो सबसे पहले कोड इमेज टैग लाइक दिस। सबसे पहले आपको इमेज टैग कोड करना होगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा src is equal to friends for code like this, and here first know that why I am coding image then slash. It is because my images are in image folder, so I type the name of the folder, then I type slash because in left side of the slash there is the name of folder, and in the right side I have to code the name of the image. So फ्रेंड्स देखिए ये फोल्डर का नेम है, मैंने आपको दिखाया भी था, और फोल्डर के नेम के बाद हमें स्लैश लगाना है ताकि हमें ऐसे हम मतलब कि हम जैसे इमेज फोल्डर में कोई इमेज है तो हमें इमेज फोल्डर से वो इमेज चाहिए, तो वो इमेज फोल्डर में है, इसलिए हमें ये बताना है कि वो इमेज फोल्डर के अंदर है, और फिर हमें स्लैश भी लगाना है ताकि हमें पता चल जाए कि वो इस फोल्डर में है। तो अब हम यहाँ पे इमेज का नाम लिखेंगे, ये इमेज का नेम है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी इमेज डिस्प्ले होती है कि नहीं। सो लेट्स सेव इट एंड लेट्स सी द आउटपुट। फ्रेंड्स देखिए ये हमारी इमेज तो आ गई है, पर ये बहुत बड़ी साइज में आई है, वो इसलिए क्योंकि इस इमेज का साइज इतना ही बड़ा है। तो अगर हमें इस इमेज का साइज छोटा करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिखना होगा विड्थ देन इज इक्वल टू देन कोटेशन, और विड्थ आपको जितनी भी विड्थ देनी है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मुझे 300 पिक्सल देनी है, तो इस तरीके से। अब ये देखिए, अब मैं आप यहाँ पे हाइट भी दे सकती हूँ, हाइट में दे देती हूँ चलिए 200 पिक्सल। देखिए friends, see like this you have to code width and height. So let's see the output. Control S. Friends, see how the image come in the smaller size. For the real size of this image is very big, but when you resize it, it come at the size of 300 pixel width and 200 pixel height. Now our today's all topic are finished, and thanks for watching my video. Bye bye friends.